thoughts. All right, so let's begin. I'm starting to record now. हमारे पास, so let's read this. This is, if you are interested कि कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, then this is October November 22 4-3. ठीक है, this is October November 4-3 2022. Okay, so it says particle of mass 1.5 kg and 3 kg lie on a plane which is inclined at an angle alpha to the horizontal where tan alpha is 3/4. भाई जब भी इस तरह की ये बात करते हैं tan alpha, alpha लिखो, tan alpha is 3/4 का मतलब ही है कि the perpendicular is 3 and the base is 4, that makes the hypotenuse 5, जिससे आपके पास sin सर, alpha और cos जी ये पूछ रहे आप कब तक क्लास लेंगे? और ये क्वेश्चन चलेगा बस। कौन पूछ रहा? अली सर वो फुटबॉल देख रहा है। फुटबॉल, अच्छा। सो द पार्टिकल्स ऑफ mass is 1.5 kg and 3 kg lie on a plane which is inclined at an angle alpha to the horizontal where tan alpha is 3/4. The section of the plane from A to B is smooth. तो फ्रिक्शन नहीं है भाई इसमें, A से B तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, आप इसको सर्कल कर लेना बेशक एग्ज़ाम में। एंड द सेक्शन ऑफ द प्लेन फ्रॉम B to C इज़ रफ, सो ये भी याद होना चाहिए कि B से C रफ है। सो वन इज़ x, द अदर इज़ 4 meters. The 1.5 kg is held at rest at A and 3 kg particle is in limiting equilibrium. Limiting equilibrium का concept ईशा ये होता है कि it is on the verge of motion. Hello, Aisha is here too. So हमारे पास on the verge of motion, limiting equilibrium ये मैं बाद में भी build करूँगा for those people who have not or not very accustomed to friction at the moment. लेकिन most of you are attending are. The weight component acting down the slope for B is 30 sin alpha and sin alpha की वैल्यू हमने 0.6 निकाली भी है. So that is the weight component. Friction acts up the slope क्योंकि उन्होंने कहा it's in limiting equilibrium, which means that it's about to move. So friction is against the weight component क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि ये नीचे की तरफ आए and it is in limiting equilibrium बोला हुआ है उन्होंने. ठीक है, the distance AB is x and the distance BC is 4. Find the coefficient of friction between the particle B. Show, not find, show that this is 0.75. So friction का basic formula हम apply करेंगे. Friction is equal to mu times R. R is the normal reaction to this surface. ये आपके पास weight का वो component है जो इस object को fix करता है with the surface. ये normal component जिसको कहते हैं perpendicular to the surface. This is 30 cos of alpha और cos alpha की value हमने निकाली हुई है 0.8. So 3 8s are 24 Newton, ये हो गया. और 30 साइन अल्फ़ा जो है हमारा बन रहा था 30 टाइम्स 0.6, तो वो बन रहा था हमारा 18 न्यूटन. सो फ्रिक्शन की वैल्यू इज़ द सेम, फ्रिक्शन इज़ अपोजिंग मोशन, इज़ द सेम एज वेट का कॉम्पोनेंट नीचे. सो 18 इज़ इक्वल टू म्यू टाइम्स आर विच इज़ 24. सो आर की वैल्यू देयर फॉर आपके पास आ जाती है 18 डिवाइडेड बाय 24. थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूंगा ईशा तुम्हारे लिए. फ्रिक्शन इस वेट के बराबर इस वजह से है कि ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, मतलब ये अपनी लिमिट पे पहुंच रहा है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ मोशन. तो बस फ्रिक्शन जस्ट इनफ है कि वेट को काउंटर करिए, वेट के कंपोनेंट को. सो दैट इज़ वाई हमने ये काम किया है. आर वहाँ हमेशा जो आर है कोई और फोर्स लग नहीं रही ना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर. सो आर इज़ द नॉर्मल रिएक्शन टू द सर्फेस वहाज. सो
मैं यहाँ पे एक छोटा सा तुम्हारे लिए एक साइड नोट बना देता हूँ कि वेट जो होता है वो यूं एक्ट करता है डायरेक्टली नीचे mg, और इस की वजह से इस वेट के एक्ट करने की, एट एन एंगल एक्ट करने की वजह से दो कंपोनेंट बनते हैं, ये दो एक है एम जी साइन थीटा, तुमने ये याद रख लेना है आज, और ये है एम जी कॉस थीटा हमेशा, ठीक है। तो हमेशा जो है ये एम जी कॉस थीटा, कोई और फोर्स नहीं लग रही, तो ये आर के बराबर है, ठीक है, वर्टिकल या परपेंडिकुलर टू द सर्फेस के हिसाब से। 30 साइन अल्फ़ा ऐसे आया है रोशान, रोशान है फातमा ये, ओके ठीक है। जी सर। ऑलराइट, इस तरह आया थर्ड एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा की तरह आया है। 3 kg मैस है ना, तो 3 into 10 और साइन थीटा, ये तुम्हें पता है ना कि साइन का कंपोनेंट बनता है ना डाउन द प्लेन, जी सर। ठीक है। तो एम जी की वजह से 30 आया, ठीक हो गया, 3 times 10। सो यह आपने रिड्यूस किया, दिस इज़ 9 times नॉट 9, 6 times 3 and 6 times 4, वी गेट 0.75। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया। आई बिलीव हर एक से हो जाना चाहिए यहाँ तक। देन इट सेज the 1.5 kg particle is released from rest, so the one which was at the top. In the subsequent motion, the two particles collide and coalesce, which means they become one. The time taken for the combined particle to travel from B to C is 2 seconds. So they're giving us information कि B से C जब ये combine हो जाते हैं, तो the time it takes for them to travel is 2 seconds. The coefficient of friction between the combined particle and the plane is still 0.75, and they want us to find x. Now you need to understand x ka what effect does x have on this other information B से C travel करने की. So B to C जो info है वो थी that the time it took for the combined particle to move was 2 seconds, and we know the distance that is covered from B to C is 4 meters. Now if we and then they also said that when they become one unit, the coefficient of friction is still the same. Now when they hit, what other information can a person deduce? When they become one unit, the overall mass becomes 4.5 kilograms, which means that the weight component acting down the slope becomes 45 sine of alpha, and the normal reaction to the surface becomes 45 cos of alpha. The 45 cos alpha multiplies with the coefficient of friction mu r, and that gets us the value for the friction. So one can say कि जी आप इससे acceleration down the plane निकाल सकते हैं. You can find out the acceleration. Well, how? Again, weight component 45 sine alpha acting down the slope minus friction. Friction is mu is 0.75 times r, which is 45 cos alpha, is equal to m 4.5 times a acceleration. So I would need help with the calculations. Sine alpha की value we were given as, we found that out ourselves earlier शुरू के अंदर when the question started. Sine alpha 0.6 था और cos alpha 0.8 था. So sine alpha was 0.6, cos alpha was 0.8. So all we're doing is you're using the calculator, और इससे हमारे पास acceleration की value आ जाती है. Can somebody just
calculate this, it would So be, minus 5.47. oh, it does not come out as, it's decelerating, is it? I don't think so. What did you get? ईशा आवाज नहीं आई. Sir, 0. 0 when you subtracted them. Yes, sir. Okay. Yes, sir, 0 here. All right. Zero is I'm just writing for myself as a note to self. Interesting. Now, when acceleration is 0, that means that the distance traveled over time is what the value for speed should be. The distance traveled is 4 meters and it takes 2 seconds, which means its speed is 2 meters per second. मतलब basic पे आ जाते हो. It's like an O-level kind of an information कि constant speed है. When acceleration is 0, then the speed is constant. And the speed then is 2 meters per second. So what does that tell us? It informs us that A जब B को hit किया तो A B की combined speed 2 है. And it just moves with that same steady speed. So now we need to think कि A और B की जो combination है, we must now think momentum. Why do we think momentum? Because ये दोनों hit करके एक unit बन गया. Momentum before collision, that means mass of A times the velocity of A plus mass of B times the initial velocity of B is equal to their combined masses times their common velocity of 2 units. थोड़ा सा मैंने obviously I did not explain कि हम ये क्यों कर रहे हैं. I am hoping कि कुछ लोगों को खुद समझ आ रही हो, but I'll obviously explain as soon as we are able to get that initial velocity of A. Initial velocity of A is unknown क्योंकि B को हमने at rest रखा हुआ था 3 kg mass को, उसकी speed 0 थी और जब ये दोनों मिलके कोएलिस हो गए, एक यूनिट बन गया, तो उसके बाद ये 2 की स्पीड से मूव कर रहे थे. 1.5 times the initial velocity of A is equal to 9. 1.59 को 1.5 से डिवाइड करो, कितना मिलता है? 6. थैंक यू ईशा. 6 meters per second से जो है A ने B को हिट किया है. That's a key information. Why is that a key information? Because हमारे पास अब ये पता चल गया कि as the object on top, which is A, it has traveled x meters, its speed has become 6. So I can say, so I hope the diagram is in your heads. The distance traveled is x meters for A. Initial velocity is 0. Final velocity हमने निकाली है 6, क्योंकि जो अभी की जो आपने initial निकाली है वो impact की निकाली है, upon impact. और पिछले motion की as it goes from A to B वो उसकी final velocity बनती है. तो हमें इसकी सिर्फ acceleration down the plane चाहिए. Acceleration down the plane के लिए हर चीज़ है. You have the coefficient of friction in the first part. You've worked with that. तो 1.5 kg mass में हम कहते हैं कि जी mg, which is 15 sine alpha is the weight component acting down, minus friction, which is mu r. R is 15 cos of alpha, is equal to ma. 1.5
A. I'll repeat, I'll show that again कि ये कैसे निकला है. हमारे पास ये 15 न्यूटन नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा था. इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक बनता था 15 साइन और एक बनता था 15 कॉस. 15 कॉस का काम था नॉर्मल रिएक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करना. 15 कॉस ऑफ अल्फा वो 0.75 से मल्टीप्लाई करके आपके पास फ्रिक्शन आ रही थी. तो बेसिकली आपने तो ये स्मूथ नहीं है. ओ माय गॉड राहिम, थैंक्स. तो ये तो हमारा बिग मेजर ब्लंडर हो रहा था. तो दिस इज स्मूथ, फॉरगॉट अबाउट दैट. फ्रिक्शन तो आगे जाके थी, तो मतलब देयर इज नथिंग टू डू. यहां पे तो फिर क्या था, ये क्वाइट वी डिड नॉट नीड दिस. देन व्हाट हैज हैपेंड, हैव थॉट प्रोसेस में क्या फिर प्रॉब्लम आई है. इट कुड, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड हमने यहां पे लिखा है एक्सेलरेशन. गाइज आर यू श्योर कि तुम लोगों ने ये एक्सेलरेशन की वैल्यू सही निकाली थी. तो फिर खैर हमारी ज़िंदगी आसान होगी. अगर इफ़ इट इज़ अ स्मूथ प्लेन देन वी दिस थिंग इज़ अ ज़ीरो. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी से सी था. थैंक यू राहिम, अदरवाइज बिल्कुल गड़बड़ हो जानी थी. साइन अल्फा is going to be the same value which was 0.6 is equal to 1.5a. Acceleration की वैल्यू क्या निकली इस तरह, 15 times 0.6 divided by 1.5 कितना बनता है, 6. 6. ये हमारे पास आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गाइज मेक श्योर ये वाली जो एलिमेंट है ना, दिस वॉज अ मिस्टेक हेयर. इस मिस्टेक को, वाई डिड वी मेक दैट मिस्टेक, वाई डिड आई मेक दैट मिस्टेक, एंड राहिम वॉज एबल टू कैच दैट कि ये स्मूथ था, हमने लिखा हुआ भी था. somehow जोन आउट कर गए एंड डिड नॉट थिंक के दिस फ्रिक्शन खुद ही ले आए. फ्रिक्शन तो बी से सी थी, ए से बी कोई नहीं थी. So which is why weight component is directly equal to ma. There is no need for anything else. This gets us the acceleration 6. इस acceleration 6 को अब हम use कर सकते हैं और third equation of motion use करके हम distance निकाल सकते हैं, which should become v square equals u square plus 2as. v being 6, u being 0, acceleration being 6, s being x. So this becomes 36 divided by 12. तो x की वैल्यू हमारे पास 3 meters आ जाती है. Does that make sense? I guess it does. या इसके अंदर जहाँ पे हमने ये लिखा है this would have been, अब ये जो मैंने बॉक्स में बनाया, this is not going to be written. You'll just write 15 sin alpha is equal to ma. अगर फ्रिक्शन होती then you would have gone on to say weight component minus friction is equal to ma. फ्रिक्शन है नहीं क्योंकि स्मूथ सरफेस है. उससे हमने निकाल ली थी एक्सेलरेशन, डिस्टेंस x था, फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके. मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की इक्वल किया. उससे हमें वेलोसिटी मिल गई ऑब्जेक्ट ए की एज इट हिट बी. वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई. इधर इनिशियल ज़ीरो था, एक्सेलरेशन नॉर्मल तरीके से निकाल ली, वेट कंपोनेंट इज इक्वल टू एम ए करके, एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम ए करके, और उससे एक्सेलरेशन आ गई. फिर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने फिर निकाल लिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड. सो दिस वाज 6 marks फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. देन कम्स the next part where it says find the total loss of energy of the particles from the time 1.5 kg particle is released until the combined particle reaches C. Now
total loss of energy till this combined particle hits the bottom. Now the thing is, total loss in energy would be initial energy minus final energy. So initial minus final. The final energy is easy to calculate because as it goes and hits the until the combined particle reaches C की बात कर रहा है. So visualize this. As it reaches C, all the only energy that it now has is the kinetic energy. And the combined particle is of 4.5, 3 plus the 1.5, it's 4.5 in mass. So you'll do half into mass into velocity square, and I believe their combined velocity was, I don't know, what was it, 2? Their combined velocity was 2 v square. अच्छा, इनिशियल एनर्जी जो है वो कह रहा है कि भाई लॉस इन एनर्जी टोटल बताना है. तो भाई आपके पास ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस केस में मास आकिफ आप जिस तरह सम टाइम अर्लियर यू आस्क्ड समथिंग डिस्प्लेसमेंट की जो तुम बात कर रहे थे. नाउ दिस पर्टिकुलर हाइट is what gives the system or both these objects separate potential energies. तो इन दो objects को जब शुरू में release किया है, they are not moving, they just have a potential energy. So इसका potential energy क्या है? mgh. m is 1.5, g is 10 और h इस केस में आ गया because you found x already. x निकाला है तुमने. x तुमने क्या निकाला था? 3. So 3 plus 4 is 7. So this height is 7 sine alpha. Why 7 sine alpha? The slope is 7. Alpha is there. This perpendicular is sine alpha equals perpendicular over hypotenuse. So 7 sine alpha is the value of this perpendicular length. Or similarly, इसका जो होगा पोटेंशियल एनर्जी बी का, क्योंकि इट्स ऑल्सो स्टेशनरी, इज एम जी साइन अल्फ़ा विच इज़ 4 साइन अल्फ़ा. सो ये दोनों आप ऐड कर दोगे एनर्जीज. दिस इज़ द इनिशियल एनर्जी माइनस द फाइनल एनर्जी दैट इट हैज़ इज़ द टोटल लॉस ऑफ एनर्जी. दिस इज़ व्हाट दे वर आस्किंग फॉर. इज़ दैट क्लियर टू ऑल गाइज? हेलो मिस्टर अली वरैच, तुम मैच देख रहे थे?